आज का नहीं ज्वाइन हुआ है लेक्चर है क्या आज बड़े में फर्स्ट लेक्चर अरे हाँ या ना बॉटम नहीं हमारा सिंह बाद श्रद्धा भरत राजदीप अदिति नमन श्रेया and Avnish ना okay Shreya and Avnish is fine almost same both anyway good evening children okay. My name is Rahul what you say as RSM okay what's your lecture timing 4:15 so we would for my lecture it will never be on 4:15 okay so you can have the liberty of 5 minute data okay conditions क्या उस दिन पब्लिक हॉलिडे ना हो तो मैं टाइम के पहले ही आ जाऊंगा but regularly if it is there I may not be able to come at 4:15 I may try to come by 4:30 okay या 4:40 तक 45 तक आ जाऊंगा okay रहा सवाल सिलेबस का our syllabus is compared to the bio का बहुत कम है so we can complete the syllabus very easy so sir we are okay I will go slowly in the syllabus part कोई भागने की जरूरत नहीं है syllabus देखिए so we can go slow in the syllabus and unless until you understand you can keep on asking sir नहीं समझना है sir नहीं समझना है इसके पहले क्लासेस जाते थे कभी ट्यूशन क्लासेस इसके जाते ना प्रॉपर क्लासेस जैसा रीजन बिकॉज पहली बार क्लासेस आ रहे हो थोड़ा आदत नहीं होता स्कूल में बैठने की आदत है मजबूरी है पर यहाँ पे इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो so I think let's see how we go about with the part before I start with the syllabus anything you want to ask that's my name I'll be taking you almost entire biology, but okay, we will try to cooperate some side part on the PPT, some would be on the proper chalk and board method. Okay, no doubt I can do it on PPT, but फिर वो COVID का feel आएगा कि क्या अपन स्किन के ऊपर बैठे हुए so I don't want that अभी थोड़ा COVID से हट गए so let's have a proper chalk and board method. Okay. About your textbooks and notebooks स्कूल चालू हो गया कितने जन का चालू हो गया बायो चालू हो गया decided with biology syllabus which chapter fundamental cell the fundamental load of life वही ना ऐसा कोई चैप्टर है ना बायोलॉजी में मतलब पता चला सर मेरा कौन सा चैप्टर था ओके टेक्स्ट बुक है नहीं है सिर्फ पूछ रहा हूँ ये बोला ऐसा इमीडिएटली निकालने की जरूरत नहीं यार है ओके घर पे ही रखना then do not carry the biology textbook plus for my lecture science textbook over here okay? तो थोड़ा 10 ग्राम कम हो जाएगा आपके भारी भरकम बैग में से say I do not want a textbook so please do not carry textbooks I require your volumes volume हमें carry करना है so I want your volumes over here CBSE और ICSE में यही डिफरेंस है हम ICSE में टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं वॉल्यूम को CBSE में वॉल्यूम फॉलो करते हैं टेक्स्ट बुक में whatever is given in टेक्स्ट बुक हमसे ज्यादा ही कवर करते हैं वॉल्यूम so we would be going slightly wherever required extra also ताकि आपको समझ में आए because CBSE is easy but CBSE is fill in the blanks
मतलब बीच में का बताती है, तो बीच में ब्लैंक है वो अपन भर लेते हैं ताकि बच्चे को एक पूरा पिक्चर आ जाए, अरे हाँ टेक्स्ट बुक में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट इज वेयर वी कम इन टू पिक्चर. एम आई क्लियर? ओके, मैं सुनाई दे रहा हूँ प्रॉपरली लास्ट बेंच? अभी जस्ट 2 मिनट पहले आया ना, थोड़ा वॉइस थोड़ा है इशू, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल वेयर अ माइक. ओके, सो वन अबाउट योर टेक्स्ट बुक, कीप इट एट होम. वॉल्यूम लेके आना है. अबाउट योर नोटबुक बनाया है? सर आज पहला दिन है, बना रहे हैं. साइंस कंबाइंड या बायो अलग? बायो अलग. ओके, चॉइस इज योर्स. अपन पूरे साल भर में 10-15 पेज के ऊपर यूज करने वाले नहीं, पूरे साल भर. अनलेस एंड अनटिल तुम में से कोई महानतम बच्चा होगा जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. तो फिर पनिशमेंट में पूरा बुक ही खत्म हो जाएगा जल्दी. सो सेकंड ऑप्शन में जाएगा. पर इफ यू आर सिंसियर, गुड इनफ, मैक्स टू मैक्स 20 पेजेस, उसके ऊपर यूज होने वाला नहीं. सो आइडियल ऑप्शन वुड बी आइदर टू कंबाइन विद केमिस्ट्री और फिजिक्स, योर विश, या अलग से अमीर हो, है ना, अलग से बना सकते हो. इफ यू आर 8th स्टैंडर्ड ओल्ड बुक, कोई पुराना बुक होगा 8 का घर पे, उसके फर्स्ट पेज को टर्न करके भी अपन यूज कर सकते हैं. नो, बीइंग अ बायो टीचर, रीयूज, environmental friendly, so you can do that option also. Next, always require a pencil, eraser, sharpener, pen and scale. Okay, लड़कियों के पास सब कुछ होता है ऐसा मैं मान के चलता हूँ. लड़कों के पास 10 में से 2 जन के पास होगा, 8 जन बेकार होते हैं. इसको देख के अब ऐसा लग रहा है इसके पास कुछ भी नहीं होगा. मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब एक पेन ही होगा तो अपना जो नॉर्मल कॉलेज फील होता है ना, ऐसा बुक यहाँ पे डाला, पेन इधर डाला और चले पैसा. तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स अगर ऐसा कुछ हुआ तो ज्यादा कुछ, आई वुड पर्सनली टेक केयर. क्या मैं आपका पॉकेट चेक करूंगा, उसमें से जितना ही पैसा निकलेगा अगर हुआ तो सर सेंड यू डाउन टू बाय अ पेंसिल बॉक्स. मतलब नेक्स्ट टाइम भूलोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, अपन यहाँ से पेंसिल, तुम्हारा ही पेंसिल तुम्हें देगा, दिया जाएगा. अफसोस पॉकेट मनी का पेंसिल पे जाएगा, फिर तुम्हारा एक वड़ा पाव कम हो जाएगा या चिप्स कम हो जाएंगे. दैट वुड बी अ डेफिनेट पार्ट. तेरा तो जाएगा ही जाएगा. एंड गर्ल्स, दान धर्म करना अच्छी बात है पर हमेशा मत करते रहो, बिकॉज आई नो ऑलवेज गर्ल्स आर रेडी टू गिव. वो भी लड़का है, अगर तू उसको देते बैठेगा तो कभी भी लेके आए तो then the problem with this is so one about the pencil setup. Now you need to answer this sincerely. Okay, आप आंसर करोगे तो मैं हेल्प करूंगा. इट्स लाइक गोइंग टू अ डॉक्टर. डॉक्टर को बोलोगे मैं सर प्रॉब्लम है, डॉक्टर कुछ कर सकता है? अरे हाँ या ना, डॉक्टर को कुछ बोला ही नहीं तो तुम्हें मेडिसिन देगा, क्योर करेगा, बहरे हो, भूखे हो, आवाज आता है आ ऊ, यस सर. अच्छा, मतलब सिर्फ बॉयज घूमके बहरे नहीं, गर्ल्स घूमके बहरे. आवाज तो यहाँ से हुआ ना, जैसे आए नहीं. ब्यूटी बट डेफिनेट नंबर. अच्छा क्या अभी भी डेफिनेट नंबर? तो सच्ची डेफिनेट नंबर होता है नहीं ना? तो आवाज निकालो ना बाबा. ऐसा मरा हुआ का सही एकदम सिंसियरली जाओ. अच्छा सही है तो बोलो, आई कैन डू दैट आल्सो. थोड़ा तो हंसो यार, अभी है 10 बाकी है, अब तो 9th में हूं, इसलिए पहले से प्रेशर ले लिया. ओके, सो पेंसिल हो गया. हाँ, the sincere answer. How many of you are good in drawing? सर इतना अच्छा ड्रॉ करते हैं क्या पूछो ही मत. ऐसा ड्राइंग बनाते हैं कि जो बोलता है क्या ऐसा कोई है कोई एक्सेप्ट करे सर, माय ड्राइंग इज नॉट गुड. नो,
जैसा बाजू वाले का करते क्या, अरे उसने बोला सर मैं कर रहा हूँ। अरे यू नीड टू नो नो योरसेल्फ, आपका ड्राइंग अच्छा है बुरा है तो बुरा है, उसमें कोई हेल्प कर सकेगा नहीं करना। कितने जन का है, 1 2 3 4 5 6, तो तुम दोनों का अच्छा है ऐसा मान के करते हो, ठीक है। देन फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, वी आर स्टडीइंग बायोलॉजी। बायो का सबसे बड़ा बेस होता है स्कूल। आज था कितने बजे छुट्टी है स्कूल, 1 बजे, 2 बजे घर पे आ जाते हो, खाना खा लिया नहीं, एप्पल है मेरे बल्लू, उतना ही देता हूँ है ना। ऐसा लग रहा है कि मरे हुए क्लास में पढ़ा रहा हूँ, फिर आंसर ही नहीं आ रहा है, नींद से उठ के आए हो, या आई वुड रादर से बेटर, मम्मी डैडी ने लात मार के भगा है, जा बेटे जा, ड्यूटी जा और झंडे यार क्या, ऐसा कुछ जाएगा जरा। Then biology without diagrams is impossible. When I say biology, it has to be diagram, like body does. So here, the moment you did not have a drawing problem, that's okay. But drawing the problem, man, so we need to rectify. I am not saying that I rectify करके आपको MFSL बनाऊंगा, okay? I will become a big artist. उतना मैं नहीं करता, I'm not an artist. But we can try to improve. कि बाबा वो इंसान है कि बंदर से बंदर ही लगे, इतना तो आप कर ही सकते हो. So what is the best option? डायग्राम आपके वॉल्यूम्स में, डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में, और डायग्राम अपन बोर्ड पे भी ड्रॉ करेंगे. 3 जगह पे अपन ड्रॉ करेंगे. 3 जगह पे ड्रॉ मतलब 2 जगह पे ऑलरेडी ड्रॉ है, 1 जगह पे अपन ड्रॉ करने वाले. तुम्हें ऐसा लगता है कि सर एक बार बोर्ड पे ड्रॉ किया हमने यहाँ पे आपको कॉपी कर लिया तो आ जाएगा, ऐसा नहीं. तो whatever I draw, it is almost 20 years of experience. तो वो इतना परफेक्शन में शायद आता है, ऐसा मुझे लगता है. Still I am not happy with my diagrams. इतना करने के बावजूद मैं हैप्पी नहीं. तो चिल्ड्रन, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आप पहली बार बना रहे हो और सर डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा ना फटक से बनाने. यू नीड टू प्रैक्टिस, एंड द बेस्ट ऑप्शन टू प्रैक्टिस इज घर पे जाना. बटर पेपर पता है, ट्रेस पेपर, और उसको बटर पेपर भी बोलते हैं. तो खरीदना है एक शीट, फिर इनटू वो डायग्राम जो आपको कॉपी करना है उसके ऊपर उसके साइज का थोड़ा बड़ा साइज कट करना, ठीक. और फिर मम्मी डैडी ने जो बचपन में किया था, ए फॉर एप्पल, याद है, मम्मी हाथ पकड़ के आपने को समझ में नहीं आता ए फॉर एप्पल है कि बी पर बॉल है, और अपन लिख रहे, मम्मी ने हाथ पकड़ के क्या करो घुमाते हुए. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? नो. पर वो इतने बार रिपीट करने से क्या होता था, इतना आता था, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द शेप, साइज भी आ रहा था. अगर इतना बड़ा है तो उतना बड़ा ही आप लिखोगे, और अगर इतना से बड़ा है तो इतना ही आएगा. धीरे धीरे आप साइज आएगा, प्रपोर्शन आएगा. Then board says your diagram need to be neat and proportional. Board doesn't say it need to be Xerox form. Okay? वो हम टीचर एक्सपेक्ट करते हैं, पर बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करते. बोर्ड बोलता है ठीक है यार बच्चे ने बना लिया वही बड़ी बात है. So for that you need to practice like this. तो जब भी टाइम फ्री होगा, बोर हो रहा, एक क्लास में अपन बैठे हैं, एक पीछे वाला बैठ के मेरा पीछे कार्टून बनाएगा, आई लव नाइकी या आई लव यू या और कुछ, ये सब हरकतें करने का अच्छा, ये हरकतें थोड़ा बेटर हो. वरना मेरे पास हरकतें करने के लिए और भी आता है. तो तुम्हारी हरकतें चालू हो गई और खत्म होने के बाद आई विल स्टार्ट. आई कैन ड्रॉ योर फेसेस, आई कैन मेक यू मॉडल ओवर. मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. So I really hate पीछे बैठ के ड्राइंग कार्टून बिल्टून करते बैठे, और टेस्ट भी किया तो फिर तुम शक्ल पे ड्रॉ करो. रोटी का टेस्ट खराब होना नहीं चाहिए. समझ में आ गया? स्कूल की आदतें बंद हो.
So children, try doing this diagram smoothing. I will be definitely helping you out with the proportion how to go. Here, without it. So now we start with our first chapter. Okay. तुम्हारे पास 1 मिनट है. अभी भी कुछ पूछना है मुझे, सर एनीथिंग? एनसीईआरटी में एक चैप्टर से बाहर है, बट यूपी में मतलब ज्यादा है, तो यूपी में ज्यादा पड़ेगा. यूपी में जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर सभी ये एनसीईआरटी में ठीक तो रैशनलाइज क्वेश्चन. हाँ, तो वो एनसीईआरटी में ना दे दिया. हमारे पास क्वेश्चन आने से पहले बुक बन जाता है. इतना डिपेंड अपॉन देना. उनके पास तो भाई प्रिंटिंग प्रेस है, अपने पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, तो आपने को पहला देना पड़ेगा. तो उसके लिए बुक में तो आपका जो क्वेश्चन रिलेटेड है इसके लिए बोलना. अपना क्वेश्चन खत्म होने का कोई बड़ा इशू नहीं. योर एंटायर ईयर, और जहां तक मेरा नॉलेज है तुम्हारा स्कूल अभी चालू हुआ है, उसके बाद वैकेशन चालू होगा. तो तुम्हारा जून के आगे तक तो फर्स्ट चैप्टर ही चलते रहने वाले, वो भागने वाले नहीं. अपने पास उतने में तो मई में अपना 10 दिन भी मिल गया, 3 घंटे का तो हो गया. ऑलमोस्ट 4 चैप्टर खत्म करके आप सेकंड या थर्ड चैप्टर भी पूरी करो. और लास्ट का एक्सपीरियंस कहता है कि आपका जून जुलाई जुलाई एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में सिलेबस ही खत्म हो गया. पहला धरना क्या है, डोंट वरी अबाउट सिलेबस पार्ट. जितना आपको सिलेबस में हम उतना ही पढ़ने वाला है, ना थोड़ा ज्यादा ना थोड़ा कम. थोड़ा ज्यादा होता है 3 चैप्टर एक्स्ट्रा है. और कोई डाउट है? लास्ट वन फॉर्म में से आपने वॉल्यूम नहीं लाया चलेगा, आपने नोटबुक नहीं लाया चलेगा, आपने कुछ नहीं किया कभी चलेगा, कभी कभार. और आपने होमवर्क नहीं किया तो बहुत कुछ चलवाऊंगा. Then I disturb your family. I'm not disturb you, I disturb your family. Okay. Homework, no writing from myself. जैसा मुझे काम में करवाता है. So yeah, whatever I teach you on this day, whenever we meet next lecture, एक हफ्ते बाद, एक 15 दिन के बाद, एक महीने के बाद, I'll ask you simple question, ABC के लिए. दो आए तो अंदर, नहीं आए तो आउटस्टैंडिंग. शॉपिंग करते हो, नीचे से शॉपिंग में 50% ऑफ, नीचे का स्ट्रिक क्या होता है उसका मतलब क्या? अरे 50% ऑफ इतना बड़ा बोर्ड लिखा होता है और उसके एकदम नीचे कॉर्नर पे कैश साइन किया है. और इस पर तो शॉपिंग करते हो कि नहीं करते हो? रॉन्ग पर्सन को चाहिए, इनको पूछना पड़ेगा. शॉपिंग करते हो कि नहीं करते हो? इनका बोर्ड है यार, अपना नहीं. इनका है. What is asterisk? Conditions applied. ठीक, अपने लिए कंडीशन आता है. 3 क्वेश्चन पूछना जितने आने चाहिए. कभी कभार कंडीशन आता है, एक क्वेश्चन नहीं है तो ही भाग. रीजन सिंपल है. if I answer what is a cell, अब चैप्टर का पूरा रामायण हो गया, उसको अभी पता चल रहा है what is a cell, उन्हें सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जानने की जरूरत नहीं पड़ी, तभी भाग जाएगा. Okay, and I do follow gender equality. Okay, इनमें थोड़ा inequality follow करता हूँ. I am worse for the girls, I am better for the boys. In a boy, what times? Okay, मार्क्स होने से लड़की को टच भी नहीं करते. Discrimination. Okay, तो आपने उसको रिवेंज करके पापड़ रन कर. Okay, अब इधर नहीं, इधर हमेशा बचते रहते हैं इसके. Okay, so I think on that note we start with the first chapter. What is the first chapter? तो अपना वॉल्यूम बिल्डिंग सब बंद करना है, आराम से बैठना. तो अपने को ये नहीं है. When I say cell, the fundamental unit of life. What do you mean by cell? How we define the term cell? अरे बुक बंद करो, देख के तो कोई भी बताएगा. पहले पढ़ा था ना इससे पहले. So what is the cell? Basic structural
and functional unit of life. So there are two keywords in the definition. When I say cell, cell is a structural and functional unit of life. Okay? Or we just simply say it as a chapter name. It's a fundamental unit of life. Fundamental matlab every cell, every living organism is made up of cell. So while defining, we say cell is a structural and functional unit of life. So now we understand what do you mean by structural and function. What is structural and what is functional? Why cell is known as structural unit of life and why cell is known as functional unit of life? थोड़ा नीच पे प्रेशर डालो तो आंसर आएगा इसको समझ में आ गया What is the structure of an organism? अमीबा का स्ट्रक्चर क्या है? Irregular. अपना स्ट्रक्चर अपना पता है स्ट्रक्चर क्या है? एलिफेंट देखा है, टाइगर देखा है, मंकी देखा है, ओरांगुटन्स, चिंपैंजीज, गोरिल्ला नहीं देखा होगा तो आज घर पे जाके आएंगे देखेंगे अपने भाई बहन. All these have a definite structure. अपन उनका नाम लेते तो अपने आगे एक इमेज बन जाता है. They have proportionate structure. So every organism structure is because of the structure of that particular cell. Okay, like if I take an organ, heart, kidney, then liver, brain, इन सब का एक स्ट्रक्चर है. वो स्ट्रक्चर किससे बना है? उनके सेल से बना हो. So every organ, every organism has a particular structure, which is because of the structure of the cell. So cell is known as structural unit of life. Now what do you mean by function? The function which we carry out, okay, like we carry out a lot of function: respiration, excretion, transportation, okay, we are seeing, hearing, talking, ये सब functions है. So all these functions are attributed to किसके वजह से हो रहे? Cell. So all the functions of an organism is because of the cell. All the organism structure are because of its cell. So that is why cell is known as the structural and functional unit of life. कोई doubt है? Everybody समझ में आया? Good. So my next question to you: can we see the cell by our eyes? थोड़ा question wrong था. Can we see the cell by our naked eyes? No. तो क्या चाहिए? सबने सुना है माइक्रोस्कोप, देखा है माइक्रोस्कोप, यूज किया है माइक्रोस्कोप, यूज किया है? क्या बात कर रहे हैं? यूज किया बच्चे? प्रोसेस को देखो. और यूज किया है? यूज किया है? सबने यूज किया है? श्योर? मुझे बोल रही कुछ नहीं. सुनो बॉस, तुमने यूज किया है? प्रोसेस को देखो. Green fingers. Good. Okay. Okay. Microsoft हमने यूज किया होगा. तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आप माइक्रोस्कोप यूज करो ना लैब में, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल या कंपाउंड टाइप? सिंपल माइक्रोस्कोप. ओके. उसमें कितने लेंस होते हैं? गुड. 2. उसमें लाइट कैसे एडजस्ट किया जाता है? वेरी गुड. माइक्रोस्कोप यूज किया है. कितने मिरर्स होते हैं?
दो साइड होते हैं, एक होता है। गुड, स्मार्ट यार, इतना आंसर आपके किसी बच्चे ने दिया है। ऑब्वियसली चिल्ड्रन, एक गलती थी आपसे सिर्फ। The microscope which you use at the school level is a compound microscope and not a simple microscope. हम सबने सिंपल माइक्रोस्कोप पहले यूज कर ली बचपन में ही, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सिंपल है ना, दो लेंस से क्या है। When you use single lens, we say it as simple microscope. बचपन में खेला होगा ना मैग्नीफाइंग ग्लास से, पेपर को गर्म करके उसको जलाया होगा, या मैस्टिक को किया होगा, या किसी फ्रेंड के बॉडी के ऊपर ना, ये सब हरकतें की होगी। नहीं की होगी तो तुम्हारा लाइफ बेकार है। ओके, सो नाउ चिल्ड्रन, दैट्स अ सिंपल माइक्रोस्कोप, बट हम जो स्कूल में यूज करते हैं वो कंपाउंड है। व्हाई कंपाउंड? मेड अप ऑफ टू लेंस। सिंपल में एक होता है, कंपाउंड में दो होते हैं। कि उसमें दो मिरर होते हैं, जैसे इसने कहा, आपने कहा दो मिरर होते हैं, नीचे की तरफ मिरर होता है, और वो मिरर ऊपर भी मिरर है, नीचे भी मिरर है, तो इट रोटेट्स। अब चाहिए वैसे एडजस्ट करते हैं। एक प्लेन होता है, कॉनकेव होता है, एक नॉर्मल लाइट के लिए और एक सनलाइट के लिए, एक ट्यूबलाइट के लिए होता है, नॉर्मल लाइट के लिए। दैट इज हाउ इट वर्क्स। मतलब यू कैन सी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, cannot be seen by naked eyes, बराबर। So microscope not there for syllabus, this is for your knowledge. माइक्रोस्कोप सबसे पहला डिस्कवर किया गया था एंटोनी वॉन लीवेनहोफ। he discovered the first microscope, सबसे पहला माइक्रोस्कोप इसने बनाया। he was basically a glass ophthalmic का काम करता था, so he was working with the glasses, तो टाइम पास बोर हो रहा है, कुछ ना कुछ हरकतें करते हो, हरकतें करते करते माइक्रोस्कोप बना दिया। पहला माइक्रोस्कोप अगर देखोगे तो ऐसा लगा सर, वो अपना पुराने जमाने में गांव वगैरह में देखा होगा कि वो लेडीज कपड़ा धोने के लिए लकड़ा यूज करते हैं मारने के लिए, वैसा लगता है। मतलब ये आज के माइक्रोस्कोप से कहीं भी रेट नहीं होगा। Okay, so it is completely different. नेक्स्ट लेक्चर में आपको डायग्राम दिखा दूंगा। So ये फर्स्ट माइक्रोस्कोप इसने डिस्कवर किया। Seeing this microscope, he made many microscopes, but with the start to work, so अब इसको देख के the next microscope was built by हाँ, वो अभी कई बुक्स में HOOK लिखते हैं, कई बुक्स में HOOK लिखते हैं, immaterialist. So Robert Hooke also made the microscope. Now his microscope was a better version than, because इसमें सिंपल था, सिंगल लेंस था, पर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। It was a compound microscope made up of two लेंस। थोड़ा एकदम ओल्ड फैशन का माइक्रोस्कोप था, पर इससे तो 100 गुना बेटर था। ओके, सो अब माइक्रोस्कोप अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा था। So he was working on with the stumps and suddenly came across the cork tissue in the plants. What is cork tissue or cork? Okay, cells है, पर क्या है comment? It is a tissue which is present behind the bark. तो bark के just पीछे there is a tissue which is referred as cork. अब चिल्ड्रन, cork जो होता है वो अपन बहुत जगह पे यूज करते हैं cork. Okay? Now what is that cork over here use? एक तो टिश्यू, दूसरा कहाँ पे यूज होता है? Wood. So what is a wood basically? Wine का bottle, एसिड के बॉटल, पुराने जमाने में बॉटल के ढक्कन के ऊपर there was a wooden part, stopper होता था वुडन का, चलो उसको भी कॉक ही बोलते हैं। okay? पर वो कॉक एक्चुअली इस टिश्यू से बनता है, so that's a cork tissue from which the cork is formed. so अब चिल्ड्रन ये कॉक जो है वो ये कॉक नहीं है, क्या अपन टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। और so this cork tissue which was there
he was observing this tissue under the microscope. So when he was observing under the microscope, what he saw first was small compartments. This small compartment was referred as like a beehive. Okay? I hope beehive सबको पता है क्या होता है? Yeah. So when he saw the structures, he compared the model beehive की तरह. He also compared it with a little room, a little compartment. Now what is this little room or little compartment? उस जमाने में children there were monasteries. I hope monasteries सुना है what? क्या होता है? Old temples. Yeah, I will not say exactly old temples where monks used to meditate. Because उस जमाने में उस टाइम पे वहाँ पे बुद्धिज्म वगैरह बहुत था. Monks used to meditate into this small compartment. अगर आप कभी अपने यहाँ पे वो लोनावाला या नासिक में वो caves है, तो इससे छोटे-छोटे अंदर कंपार्टमेंट है जहाँ पे वो monks अपना मेडिटेशन करते हैं. तो it was exactly something like that. कि वो छोटे-छोटे रूम जहाँ पे monks meditate करे. तो little room or little compartment. So from this was derived the word cell. Celluli meaning cell. Okay? Cell is an English term for little compartment, but it was Latin word cellulose, English word aaya cell, and that is how the cell came into picture. So the question which can be asked for the first 1 mark would be, who discovered the cell? Robert. In which tissue? Cough tissue. Cough tissue is present or location in behind the bark. So behind the bark of a tree or a plant. Okay. Then behind the bark, बड़ा अजीब लगता है. Okay. So you have to be specific. Behind the bark of a plant or a tree is what he discovered. यहाँ तक किसी को डाउट है? Sure. लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ वॉल्यूम में है. So you are just doing an extra work. अगर आपको लिखना है, still your choice, no issues. But everything is in the volume. Now, so cell came into picture. अब cell आ गया, तो धीरे-धीरे microscope भी advance हो गया, and then a lot of research was done. I think we will stop over here. I will try next time to come for 30 तक try करूँगा आने के लिए. 30 तो आ जाता हूँ हमारी. Okay, today I had a meeting, so it was late school में. So मेरे में एक हाथ में आगे पीछे चलेगा, पर एक बार वैकेशन आ गया, आगे पीछे हुआ तो पीछे करो. So your homework would be, अभी तो सिर्फ 3 ही वर्ड पढ़ा है मैंने, तो रिलैक्स एंजॉय, कुछ मत करना, सिर्फ 3 वर्ड तो याद रखना. You have message someone.